महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास त्वयि गिरः अथावाक्या सर्वा स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापि स्तोते हरनिरपवादः परिकरा अतीतापन्थानं तव च महिमा वाङ्गमनसयो रतद्व्यामृत्यायमचकितमभिधते श्रुतिरपि सकस्य स्तोव्याकतिविधगुणाकस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचा परममृतमनिर्मितवत् तौ ब्राह्मण किं वागपि सुरगुरोरभिस्मयपदं मम त्वयि तां वाणीं गुणकथनपूर्णेन भवतः पुनामीतीर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवस्थिता तवैश्वर्यं यत जगदुदय रक्षां प्रलयकृत त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणी विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतैहैके जडधियः किमिहा किङ्कायास खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्यै त्वय्यनौसरदुस्तौ हतधिया कुतर्कोऽयं काङ्क्षिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किं वयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादित्यं भवति अनीशो वा कुर्यान् भुवनजनने का परिकरो यतो मन्दस्त्वां प्रत्यमरवरसंसेरतैमे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदापथमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पैसामरणवैव महोक्षाखटेवाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति चाभवन् भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कञ्चित् सर्वं सकलं परत्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये तमस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथं तैर्विस्मित इव अस्तु वजिह्रे मे त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरिता तवैश्वर्यं यद्नादयदुपरि विरिञ्चो हरिरधा परीक्षेतुं याताव
वनलमनलस्कन्धवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरुगणन्तभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति आयत्नादापादं त्रिभुवनं वैरं व्यतिकरं दशास्यो यद् बाहून् भृतरणकण्डूपरवसा शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुबले स्थिराय त्वन्भक्तिस्त्रिपुरहरविस्फुजितमिदम् आमोस्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयता अलभ्या पातालेऽप्यलसच्चलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठां त्वयि आसीद ध्रुवमुपचितो मोहयति खला यदृन्धिं सूत्राम्नो वरद परमोक्षैरपि सति मधश्चक्रे बाणा परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वप्यवनति अकाण्डं ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीदस्त्रिनयन विषमसंहृतवता सकलमासाः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थाः नैव क्वचिदपि सदैवासुरनरे निवर्तं ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नि सत्त्वामितरसुरसाधारणमभू स्मरतं व्यात्मान हि वसि सुपथ्या परिभवः महीपादाघातान् व्रजति सहसा संशयी पदं वीडो भ्राम्यन् भुज परिघरुण्ड गृहगणं मुहुर्दौर्दौस्त्यं यात्यनिभृत जटा ताडित तटा जगन्द्रछायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां या प्रस्थलघृदृष्टा शिरसि ते जगन्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि तेनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यमतव वपुः प्रथाक्षोणीयन्त्या सतधितिरगेन्द्रो धनुरथो तथाङ्गे चन्दार्कौरथचरणपाणिसरयिति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभु
प्रिया हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युन्द्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषा प्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां कृतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे कृतुमतां ककर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य कृतसुफलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरा कर्म सुजना क्रियादच्छोदच्छाकृतुपतिरधिस्तनुभृता मृषीणामार्तिव्यं शरणदशदस्याशुरगणा क्रतुर्भेषस्त्वता क्रतुफलविधानं व्यसनिनो ध्रुवं करतु श्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखः प्रजानाथं नाथ प्रसमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिणभूताम्रमयुसमृसस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं प्रसन्तं ते दापि त्यजति नामृगव्याधरभसा त्वलावण्या संसाद्रतधनुसमान्याय तृणवत पुराप्लष्टुं दृष्ट्वा पुरमथन् पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामन्धावत वरदमुग्धा युवतया श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपास्रगपिनकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मृतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनां प्रत्यङ्चिन्ते सविधमवधाय तमरुतः प्रहस्य द्रोमाणां प्रमदसलिलोत्सङ्कितदृशा यदा लोक्याह्लादं हृदैव निमज्जावृतमये दधत्यन्तस्त्वं किमपि अमनिस्तन् किल भावां त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वमहुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणीरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्यास्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्तो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकारादैवर्णस्त्रीभिर्विदधतीर्णविकृति पुरीयं ते धामध्वनिभिर्वरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वमशरणं गृहाणत्योमिति पदम् अवासरे रुद्राप
पशुपतिरथो ग्रासहे महामस्ताभिमे सानाबित यद्भिदिष्टानष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायस्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽसिं भवते नमो निधिष्ठाय प्रियदवदभीष्टाय च नमो नमः चोधिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः नमो वरिष्ठाय त्रिनयनयभीष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदितमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विसोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सतोदिरक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्तैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेता क्लेशवशं क्वचेदं क्वच तौ गुणसीमोल्लङ्घिनी सस्वन्धृधि इति चकितं मन्दीकृत्य मां भक्तिराधान् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं चातकजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी पतमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरचित सिन्धुमौलेर्ग्रन्थित गुणमहिम्नो निर्गुणसेश्वरस्य सकलगणवरिष्ठा पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुव्रते स्तोतमेतच्चकार हर हर नवदं धूर्जटे स्तोत्रमेतं पठति परमभक्त्या सुन्दचिता पुमानयः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशा न परो देवो महिम्नो न परास्तुति अघोरा न परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् इच्छादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यगादिका क्रिया महिम्नास्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति खोडसी कुसुमदसन नाम सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषान् अस्तवन्मिदमकार्षीद्दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्या प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमाना अस्तवन्मिदम् अमोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् असमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमैश्वरवर्णनं
इतेषावाङ्गमयी पूजा श्रीमत्शङ्करपादयो अर्पितान्तेन देवेशा प्रीयतां मे सदा शिवा तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं य पठेन्नरः सर्वपापं विनिर्मुक्ता शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीडितो भवति भूतपतिर्महेशः इति शिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पूर्णम्।